अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू इन द क्लास कि मैं आज सी प्लस प्लस की इंस्टॉलेशन आप लोगों को बताऊंगी। तो पेज नंबर, दिस इज पेज नंबर 31 एंड वील स्टार्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरिंग डेफ सी प्लस प्लस। यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है डेफ सी प्लस प्लस। अगर आप लोग अभी अपने मोबाइल्स पर हैं या लैपटॉप पर हैं, इनफैक्ट अगर लैपटॉप पे हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, और या मोबाइल पर अगर आप इंस्टॉल करना चाहें, आप ये लिंक ओपन कीजिए। ठीक है, ये लिंक मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है, ये देखिए। sourceforge.net/projects/orwell dev C प्लस प्लस। एक्चुअली इसका नाम dev C प्लस प्लस है, इस वजह से ये सारे लिंक में दिया हुआ है आपके पास। मुझे आप मुझे थोड़ा सा प्लीज पहले ये फीडबैक दीजिए कि ये जो मैंने वेबसाइट खोली है ये आपको क्लियरली नजर आ रही है, इट्स विजिबल। सोर्स फोर्ज के आपको वेबसाइट नजर आ रही है? ठीक है, ओके। अच्छा, ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पर, और यहीं से मैं आपको इन दोनों टैब्स को स्विच करती रहूंगी। ये कंप्यूटर साइंस की बुक है आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में, और ये वो लिंक है जहाँ मैंने लिंक ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करेंगे रीड करना। डेव सी प्लस प्लस के लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले लिंक के बाद फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि जब आप लिंक से डाउनलोडिंग स्टार्ट करेंगे तो सिलेक्ट इंग्लिश एज द लैंग्वेज। लैंग्वेज आपने सबसे पहले सेलेक्ट करनी है। अब दोबारा यहाँ पर देखते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे इसे। ठीक है, ये डाउनलोडिंग चल रही है यहाँ पर, राइट। जब ये डाउनलोडिंग हो जाएगी तो फिर इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब्दुल रहमान, आप डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। मैं आपको प्रोसीजर एक दफ़ा पूरा बता दूं। अगर आप डाउनलोडिंग में बिजी हो गए तो फिर आप फोकस नहीं कर पाएंगे कि एक्सप्लेनेशन क्या हो रही है। ठीक है, तो बुक के सारे जितने भी, यस आप कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी प्रोग्राम बनाने में। लिंक हमजा मुश्तबा में, व्हाई डू आई सेंड द लिंक, इट्स अवेलेबल इन योर बुक, यू कैन सी इन द बुक, राइट। दिस इज योर बुक पेज नंबर 31, your page number 31, the link is given here. Okay, okay, downloading has been done. हम्म यहाँ से ये कंप्यूटर की बुक है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश के बाद यहाँ पर स्टेप 2 आता है, एग्री टू द लाइसेंस एग्रीमेंट, राइट। एग्री टू द लाइसेंस एग्रीमेंट यानी जितने भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको आप एग्री करते हैं, और आप यहाँ पर आई एग्री के बटन को क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 3 आ जाता है, सेलेक्ट फुल फॉर्म द ड्रॉप डाउन फर्स्ट टाइप फॉर इंस्टॉल। और इंस्टॉलेशन इसकी प्रोसेस करने से पहले हमने टिक करना है एसोसिएट सी एंड C++5, और उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन, राइट। दो एक मिनट मुझे दीजिएगा, आप लोग मुझे जरा चैट पे इतना फीडबैक साथ साथ देते जाएं प्लीज कि आपको स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं। ओके, ठीक है। और स्क्रीन शेयर पे मैं इस वक्त आपके पास दो टैब्स में हूँ, एक कंप्यूटर साइंस की बुक है और एक C++ की इंस्टॉलेशन है। ठीक है। इशल, अगर हैंग हो रही है देन इट मस्ट बी योर इंटरनेट इशू, देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर नेटवर्क इशू।
अभी तक डाउनलोडिंग पूरी नहीं हुई। देखिए ये कंप्यूटर के आपके जो डाउनलोड्स हैं उसमें ये डाउनलोड आ रहा होगा, यहाँ पर ये हो गई है, ठीक है। जब तक ये फोल्डर कंप्लीटली डाउनलोड नहीं होता तब तक इस तरह से ये अनकंफर्म्ड आता रहता है। अब ये डाउनलोड पूरी हो गई है इसलिए ये अब फोल्डर डिस्प्ले हो रहा है आपको। See, do you want to allow this app from an unknown publisher to make the changes on your devices? Yes. Please wait while the setup is loading. ठीक है, ये देखिए ये जो बुक में मैंने आपको दिखाया था कि आपके पास लैंग्वेज प्रेफरेंस आएगी, दैट दिस इज इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन क्लिक इट ऑन ओके एंड देन आई अग्री, राइट? These are already clicked. Next. And then here is the folder where you want to download this app. आप अपने कंप्यूटर में जिस जगह डाउनलोड करना चाहते हैं वो लोकेशन है ये। अगर आप यहाँ पर लोकेशन पे डाउनलोड नहीं करना चाहते तो यू कैन ब्राउज इट, और आप जहाँ पर भी जिस फोल्डर में डाउनलोड करना चाहें उसको सेलेक्ट कर लीजिए। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन इंस्टॉल। द फाइल्स आर इंस्टॉलिंग नाउ। एवरीबडी कैन यू गेट इट? आपको समझ में आ रहा है बेटे? हमजा मुश्तबा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही भाई। मना है। ओके, एक मिनट में, लेट मी स्टार्ट अगेन स्क्रीन शेयर। नाउ चेक अगेन। अब बताइए। ओके, now the setup is complete, all the files has been downloaded, that's why it is given you the option of finish. Now come to this again. Here we have seen this, the installation process. Next, after next, it is the place where you want to download the application and then install. All the files are installing and then click on finish button, right? So this is the process of installing C++. Any confusion, any question? अच्छा, अब आप लोग first tell me how many of you are taking class from the laptop? No? Acha, Hamza Mustafa, if you are taking from the laptop, start downloading, right? Start download C++. Now, again, the configuration is here. Can you see the screen?
Can you see the screen? Okay. So this is the configuration given in the dialog box. You can just press next, English language, next, and OK. Now C++ environment is shown on your screen. Can you see this? It is the environment of C++. I told you in the class, I have explained it in the class that this is the IDE environment, menu-based environment in which all the menus are given. Everybody can see the environment of C++. Okay, fine. So this is IDE environment in which I was talking about the facilities it provide, the software is providing. This is the menu-based environment like file, edit, search. You have different menus. And under these menus, you have sub-menus like new, open, save, import the document, export the document, print setup. Everything is given here in the menus in edit. These are all turned off because we are not writing any program here. That's why it is all turned off. When we start writing program here, it will be turned on, right, to use. Most of the options are also given here in the short keys. You can start from here, the project, the new project. If you are going to start the new, you can start the new project and then source file. Now coming again to your book. Better turn off your mics, please. I want to share. See, now start from the beginning. Asimal, you were late. Start from the beginning. This is the link which is given here. Okay, you can open the link here. After opening the link, when you start installation, download. When you start download, there is written download under dev C++, right? You can just click the download option. After that, can you see the book? The screen is sharing. Okay. After pressing the download button, you get this dialog box in which language preference is given. English is already given. You can select OK. Now step 2, you have to agree the license. There are some rules given. You can press I agree and then select full form of the drop down from type of install. This will select all the necessary components required to run dev++ and compile C++ source code. Source code, what is again the source code? What is the source code? Hurry up. What is the source code? Yes, Ishal, anybody else? Abdul Rahman. Source code is the program which is written in any language, right? In C++, when we write a program in C++, it is the source code, right? Now click next. Step 4, choose the location. यानी आप अपने कंप्यूटर में किस जगह इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं. You have to select that location. If you don't want to select in the given location, you can browse your computer. Now install all the files
will be installed in your computer, and then finish the setup. This is the completing the Def C++ 5.11 setup wizard. setup wizard आपके पास आ गया और फिनिश का बटन आपने प्रेस करना है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन आती है, इसको भी आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होता जाएगा। आपको इसके लिए कुछ करना नहीं होगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। आपको जस्ट नेक्स्ट 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 आपको प्रेस करना है, आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोडिंग हो जाएगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ उस प्रोग्राम को सेव करते हैं। इसके बाद मैंने आपको सी प्लस प्लस का इन्वायरमेंट दिखा दिया कि किस तरह का इन्वायरमेंट होता है। लाइक मेन्यू बेस्ड होता है, उसमें मेन्यूज होते हैं, फाइल्स, एडिट, हर सर्च, हर तरह के मेन्यूज होते हैं। अंडर द मेन्यू देयर आर आल्सो पुल डाउन मेन्यू, जो कि आप में उसी से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होते हैं। वो ऑप्शंस ऑफ होते हैं, लेकिन जब व्हेन यू राइट द प्रोग्राम दे बिकम टर्न्ड ऑन टू यूज। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू कि यहाँ पर जब हम स्टार्ट करते हैं तो प्रोजेक्ट ऐड फाइल टू प्रोजेक्ट, सबसे पहले हम प्रोजेक्ट पे जाते हैं, देन न्यू फाइल, प्रोजेक्ट इज द मेन मेन्यू, फिर न्यू फाइल, और फिर हम प्रोजेक्ट नेम देते हैं उस फाइल को जिस नाम से भी आप सेव करना चाहते हैं। क्लिक ऑन यस टू कंफर्म डायलॉग टू ऐड अ फाइल। दिस फाइल इज नॉट स्टोर्ड until इट इज deliberately saved। जब तक आप इसको पर्टिकुलरली सेव नहीं करेंगे तब तक ये सेव नहीं होगी, ठीक है। टू सेव न्यूली एडेड फाइल, क्लिक ऑन फाइल, फाइल के मेन्यू में सेव पर जाएंगे और फिर उसका पाथ डिफाइन करेंगे कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं उसको। जब प्रोग्राम लिख लिया जाता है तो कंपाइल किया जाता है। नाउ दिस इज द शॉर्टकट की फॉर कंपाइलेशन, F9। The project needs to be compiled before execution. Before execution, this is the execution window, right? यहाँ पर ये इसका प्रोग्राम का रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। The projects need to be compiled before execution. To compile, click on execute. Execute menu is given here, right? And there are shortcut keys also. Compile or press F9. Compile or press F9. F9 is a shortcut key for compilation. Compile log tab shows the compilation status. यहाँ पर आपका कंपाइलेशन एरर्स और सारे जो कंपाइल होने के बाद जो एरर्स आते हैं और जो प्रॉब्लम्स इसमें प्रोग्राम में आती हैं, ये यहाँ पर कंपाइल लॉग में टैब में शो होती हैं, अलग टैब होता है उसका। Compile log tab shows the compilation status. Compiler tab will show if there are any syntax error. Syntax error कौन से होते हैं? कल भी मैंने जो लिखवाए थे, syntax error कौन से होते हैं? जब आपसे प्रोग्राम लिखने में कोई मिस्टेक होती है, that is known as the syntax error. ठीक है, और जिसकी वजह से प्रोग्राम रन नहीं करता। There is a difference between syntax error and the logical error. The main difference, keep in mind, syntax error, program does not execute. Program does not execute. Program does not moving forward. आगे नहीं बढ़ेगा प्रोग्राम syntax error से, because there are some rules and regulations to write a language. If you do not obey that rules and regulations, then the program will not work, right? This is the syntax error. जब let's suppose I need to put a semicolon somewhere and I forget it to give the semicolon, it means that I am making an error in the program, and that semicolon is the must part of your source code. For that semicolon, the program will not move forward, will not execute. This is the syntax error, right? In logical error में क्या है कि program execute होगा, पर जो आप आउटपुट चाहते हैं वो आउटपुट नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज प्रोग्राम लॉजिक गलत हो गई है। ठीक है, कहीं आपको माइनस डालना था और वहां आपने प्लस या डिवाइड दे दिया है, तो ऑब्वियसली प्रोग्राम लॉजिक गलत हो गई। लॉजिक जब गलत हो गई तो आंसर भी आपको डिवाइड का साइन के साथ आएगा, माइनस के साइन के साथ नहीं आएगा। क्लियर? तो लॉजिकल एरर क्या होता है कि प्रोग्राम में लॉजिक गलत हो गई हो, प्रोग्राम रन करेगा, एग्जीक्यूट भी होगा, बट इट डज नॉट गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। जो आपका रिजल्ट, आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? अब आप बताइए मुझे, डिफरेंस बिटवीन सिंटैक्स एरर एंड द लॉजिकल एरर। यस, हु कैन टेल?
Yes, I'm waiting. Who is the first one? What is the difference between syntax error and logical error? Yes, Maida. Suhaib and Varda. Hurry up. Just write the answer quickly. Syntax error, in syntax error, program, execute or not. Okay. Abdur Rahman, in syntax error, program execute or not. Yes, Zimal. Good. Hmm. ठीक है. In logical error, program execute but does not give the desired result. Right? Okay. For the for the shortcut key for the compilation, F9. Right? After successfully compiling the project, run it by clicking on execute, run, yeah, pressing F10 key. So this is the shortcut key of running the program, right? This is for compilation F9 and for execution F10 key. Now coming to the topic C++ programming language, just I'm going to introduce it because I want a detailed explanation which can be done in the class, right? C++ is a general purpose programming language that was developed as an enhancement of the C language. C language का ही modified version है, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके रिजर्व वर्ड्स हैं, जिसको मैं क्लास में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ रिजर्व वर्ड्स के बारे में व्हेन आई एक्सप्लेन आईडी एनवायरनमेंट के रिजर्व वर्ड्स एक्चुअली होते क्या हैं। किसी भी लैंग्वेज के पर्टिकुलर वर्ड्स जो उस लैंग्वेज में यूज हो रहे हों उनको हम रिजर्व वर्ड्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको सी इन और सी आउट बताया था, ठीक है। अ रिजर्व वर्ड इज इन सी प्लस प्लस इज अ वर्ड whose meaning is already defined by the compiler और ये रिजर्व वर्ड्स सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी फाइल में सेव होते हैं, ठीक है। A reserve word cannot be used as an identifier such as the name of a variable. Yes, Ishal, these are the keywords. आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं होंगे, क्यों क्यों मतलब इनका ये वेरिएबल नेम के तौर पे यूज नहीं हो सकते, ठीक है। सबसे पहले सी में प्रोग्राम बनाने के लिए आपको दो तीन चीजें बहुत अपने माइंड में क्लियर करनी पड़ेंगी। एक, रिजर्व वर्ड्स, दूसरे वेरिएबल्स, वेरिएबल की डेफिनेशन, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप आगे सी प्लस प्लस में प्रोग्राम नहीं बना सकते। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल में वैल्यूज कैसे सेव की जाती हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे होते हैं, डिक्लेयर कैसे होते हैं, वेरिएबल डिफाइन कैसे होते हैं, ये तीन चीजें वेरिएबल की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रिजर्व वर्ड्स पे। रिजर्व वर्ड्स में क्या पढ़ा हमने कि विच कैन नॉट बी यूज एज एन आइडेंटिफायर, किसी वेरिएबल फंक्शन का नाम नहीं हो सकता। रिजर्व वर्ड का हमेशा एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा और वो उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा होगा। A reserved word is a part of syntax and may not have any specific meaning in English language. Like I give you the example of some reserved words. C, char.
right? There is no particular meaning for that word, right? Okay, where is C and S, float or new? These are the words. See this one, null PTR, right? Size of. Size of is not a particular word, right? There are a lot more. I'll explain it to you in the next in physical class. There is a total of 95 reserved words in C++. The reserved words of C++ may be conveniently placed into several groups. In the first group, we put those that were also present in the C programming language and have been carried over into C++. ये 32 words हैं जो C प्रोग्रामिंग में भी यूज हो रहे थे और C++ में भी यूज हो रहे हैं. अब मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाती हूँ. No, it's not in this chapter. Only the variables are defined here. See, these are the small programs here. C out, character, ch, C out. Is there any word in English C out? Obviously no. There is no word of like this. This is the reserved word of C++ programming and it is stored in C++ library file. Include IOStream. These are the files. These are the file names, right? Statements. When we understand variables, then we will discuss about the program as well. 10 minutes. Okay. So we have 32 words, reserved words, which was also the part of C and now in C++. There are another 30 reserved words that were not in C, are therefore new to C++ programming languages. ये सब कुछ commonly used जो इनके reserved words हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं. Obviously आपके लिए सारे आप यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इन रिजर्व वर्ड्स का पता होना चाहिए कि C++ की लाइब्रेरी में होते हैं. डेटा टाइप, यहाँ से जो टॉपिक है डेटा टाइप और इसके बाद कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, ये मैं क्लास में करवाऊंगी. डेटा टाइप आप ये समझ लीजिए किस किस टाइप का डेटा होता है हमारे पास. ठीक है, बुलियन डेटा होता है. ऑब्वियसली उसकी स्पेस भी ज्यादा नहीं चाहिए होती क्योंकि बुलियन डेटा क्या है, 0 और 1, सिर्फ ओनली जीरोस एंड वंस. कैरेक्टर डेटा है, उसके लिए 1 बाइट की साइज चाहिए होता है. इंटीजर को 4 बाइट्स चाहिए होता है. इंटीजर डेटा यानी नंबर्स वाला डेटा. ठीक है, कैरेक्टर डेटा वो है जिसमें सिंबल्स भी आते हैं, अल्फाबेट्स भी आते हैं, नंबर्स भी आते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट एक्सपोनेंट के साथ जो होते हैं, ठीक है, स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर्स सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 7 डेसिमल डिजिट्स. ठीक है, इसके बाद डबल फ्लोटिंग पॉइंट आता है. डबल जो 8 बाइट्स लेता है और इसका मतलब क्या है, स्टोर्स फ्रैक्शनल नंबर्स सफिशिएंट फॉर स्टोरिंग 15 डेसिमल डिजिट्स. दिस इज floating point which stores 7 decimal digits and this is double floating point that is storing 15 decimal digits. ठीक है, तो ये टाइप ऑफ डेटा है 1 2 3 4 5. boolean यानी 0 and 1. 0 is false, 1 is true. Character means numbers, alphabets and symbols. Integer, particularly numbers. Floating point, exponent with power. Double floating point, double 8 bits double and it stores up till 15 decimal digits. ठीक है, अच्छा यहाँ तो कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए प्लीज. Today I discussed about the installation of C++ and the reserved words. We have only 2 to 3 minutes left. Kindly if you have any question ask me. Okay, acha. Now your task is just to read these pages, and if you have any question, you can ask me near the physical class on Monday, inshallah. ठीक है बेटा. Okay. Ishil, I'll post the lecture in Google Classroom.